Hello dear students, welcome back to Abhijit Sana Maths. In this video we are discussing the topic that is nothing but average और इसे हिंदी में औसत और मराठी में सरासरी कहा जाता है। तो इसको समझेंगे और दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। तो एक्सप्लेनेशन, एवरेज मींस द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स। कोई भी बंच है, नंबर्स का ग्रुप है, तो वो ग्रुप ऑफ वैल्यूज का एक मिडल नंबर है या फिर उसको सेंट्रल नंबर हम बोल सकते। तो उस सेंट्रल नंबर को फाइंड आउट करना मींस वी हैव to find out the average of the group of the numbers. The formula for the average, we can calculate it as average is equals to sum of all values, means group of values जितने भी है उसको sum up करना है, addition करना है और divide करना है number of values से। कितने numbers है वो number से हमको क्या करना है, divide करना है। तो in symbolic form the formula is the formula of average, that is x bar, can be written as the summation of x divided by n। और यहाँ पे summation of x means जितने भी numbers है ग्रुप में उसका sum होगा और divided by जो n है, that n is nothing but the total numbers in the group। तो इस तरह से we can easily find out the average of the number by putting their values in this formula, that is x bar is equals to summation of x divided by n। Here we are taking a problem number 1, that is we have to find out the average of 15, 25, 35, 45 and 55. We know the formula of average, that is average is equals to x bar is equals to summation of x divided by n। और ही यहाँ पे क्या होगा, जो summation x है तो ये जितने भी नंबर्स है इस ग्रुप में तो इसका समेशन होगा। तो therefore it will be summation of these numbers, that is 15 plus ये 25 plus 35, next number 45 and then next number 55 divided by n। n is nothing but the total numbers in this group। how many numbers are here? यहाँ पे कितने नंबर है? ये 15 फर्स्ट नंबर, 25 सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर। तो टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 5 है। तो डिवाइडेड बाय 5 करना है हमें यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल्स टू, हमें समेशन करना है 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 एंड व्हेन वी कैलकुलेट द समेशन ऑफ दिस we will get the summation is equals to 175 and divided by this 5 as it is. After solving this we will get 175 divided by 5, that is nothing but the 35. Therefore we get the average is equals to 35. In this way we can easily calculate or find out the average of the group of the numbers। इस तरह से हम average group of the numbers का average हम calculate कर सकते हैं। Coming to the another numerical problem, find the average of 8, 12, 16, 20, 24 and 28. We know the formula of average, that is average is equals to, that is x bar is equals to summation of x divided by n। here total number का summation यानी 8 plus next number that is 12 plus next number 16, उसके बाद में 20, next number 24 and then 28। यहाँ पे इन टोटल का इन नंबर्स का समेशन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर हियर। हियर आर, this is the first number, this is the second, third, fourth, fifth and sixth। total numbers are here 6, therefore we have to divide the summation by 6 and we will get the average। now on calculating this, that is 8 plus 12 plus 16 plus 20 plus 24 plus 28, that is nothing but 108 divided by 6 as it is। on calculating or dividing 108 by 6 we get the final answer, that is 18। therefore here the average of these numbers is 18। तो इस प्रकार हमने इस नंबर का भी फार्मूले से एवरेज निकाल लिए हैं। then do like, share and subscribe Abhijit Sana Maths for basic, intermediate and advanced level of mathematics, physics and coding। subscribe now, join the learning journey।